Hi everyone, I am Vanshika Tyagi. Welcome back to my channel Dentistry with V. Today we are going to discuss a very important topic, that is local anesthesia. अब जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया वर्ड बना है, ये दो वर्ड से बना है, लोकल एंड एनेस्थीसिया. लोकल मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई होने वाली चीज़, और एनेस्थीसिया वर्ड बना है हमारा एन प्लस एस्थेसिस. एन मतलब किसी भी चीज़ का एब्सेंस और एस्थीसिया मतलब सेंसेशन. तो किसी एक लोकल जगह पे जो भी ड्रग्स हमारी सेंसेशन का लॉस करा दें, मतलब उस जगह पे हमको कोई पेन फील ना हो, दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेटिक्स. Now let's see what the definition says. So what is local anesthesia? It is described as a loss of sensation in a circumscribed area of the body. Sensation का loss एक specific area में हो रहा है body के, caused by, अब ये दो तरह से हो सकता है, either by depression of excitation in nerve endings or an inhibition of the conduction process in peripheral nerves. जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं उसमें जो एक्साइटेशन होता है उसको डिप्रेस करा देगा. दिस इज वन मैकेनिज्म. और इट विल वर्क बाय इनहिबिटिंग द कंडक्शन प्रोसेस इन द पेरिफेरल नर्व्स. ऑल्सो देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन लोकल एनेस्थीसिया. अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, जो हमारा एनेस्थीसिया है या जो हमारे एनेस्थेटिक्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होते हैं हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स और एक होते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स. जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं दे वर्क ऑन दी CNS, whereas लोकल एनेस्थेटिक्स वर्क ऑन दी पेरिफेरल नर्व्स. जनरल एनेस्थीसिया हमारा पूरी बॉडी पे काम करता है, और जो हमारे लोकल एनेस्थीसिया होता है वो सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड या फिर सर्कमस्क्राइब्ड एरिया पे वर्क करता है. In general anesthesia, there is loss of consciousness, whereas in local anesthesia, there is no loss of consciousness. तो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस है in general anesthetics and local anesthetics. Now let's come back to the topic. जो हमारे local anesthetics हो सकते हैं उसको हम या तो टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं in the form of gels और sprays, या फिर हम उनको locally inject भी कर सकते हैं. There is a reversible loss of sensation. जो भी हमारा sensation का loss हो रहा है वो reversible है, which means after some time the action of the local anesthesia gets reversed. हमारे जो local anesthetics होते हैं वो motor और sensory दोनों nerves पे काम करते हैं. They cause muscular paralysis and there is loss of autonomic control. अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि एक्चुअली जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो कैसे बने हैं. ठीक है, सो केमिकली दे आर वीक बेसिस. दे आर सपोज टू हैव एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी. हमारे LA के एक तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ऑन वन साइड, और दूसरी साइड हमारा होता है लाइपोफिलिक एरोमेटिक चेन, एंड बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर जॉइंड बाय द एल्काइल चेन, either through ester or through the amide linkage. This is ester, not ester. So on the basis of linkage, LA हमारा दो तरीके के हो गया. एक हमारा हो गया ester linked और एक हो गया amide linked. अब ester linked का एग्जाम्पल है प्रोकेन एंड कोकेन, PC, प्रियंका चोपड़ा से याद रखना. और amide linked हमारा हो गया लिडोकेन, जिसको हम लिग्नोकेन भी बोलते हैं. Now coming to the main classification of local anesthesia. तुम्हारा local anesthesia दो तरह का हो सकता है, injectable anesthetics and surface anesthetics. Injectable anesthetics में हमारे तीन types आते हैं on the basis of potency and duration. The first one is low potency or short duration. The second one is intermediate potency and duration. And the third one, high potency and long duration. Whereas the surface anesthetics can be soluble and insoluble. अब इस पूरे चार्ट का हमारे पास एक निमोनिक है. चलो तो हम इसको कैसे याद रखेंगे. देखो एक बच्चा होता है बॉब, ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ ना गेम खेलो. सो बॉब प्लीज कम लेट्स प्ले द बर्ड क्लिप. हमारे गेम का नाम क्या है, बर्ड क्लिप.
So the mnemonic goes like Bob, please come, let's play. क्या खेल रहे हैं हम? The bird clip. Okay, now let's fit this mnemonic into our classification. जो हमारे surface anesthetics है उसके insoluble part को हम याद कर रहे हैं BOB से. B stands for benzocaine, O is for oxythazane and the second B stands for butyl amino benzoate. तो insoluble वाले part का हमारा mnemonic हो गया BOB. Soluble वाले part का हमारा mnemonic हो गया clip. C stands for cocaine, L is for lignocaine and P is for proparacaine. Now let's come to the injectable anesthetics, the low potency and short duration. We'll remember this by please come. P is for procaine and C is for chloroprocaine. Intermediate potency and duration, let's play. Let's play. L stands for lignocaine and P stands for prilocaine. The high potency and long duration ones, we remember these by the bird. T is for tetracaine, B is for bupivacaine, R for ropivacaine and D is for dibucaine. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स है, these can either be injectable और surface anesthetics. इंजेक्टेबल में हमारा आता है लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन एंड हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन. सरफेस एनेस्थेटिक्स में हमारा आता है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. आवर mnemonic goes like Bob, please come, let's play the bird clip. तो लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारा आता है प्लीज कम, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन. इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन में हमारा आता है लेट्स प्ले, लिडोकेन और लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन. हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारा आता है द बर्ड, टेट्रोकेन, बुपिवेकेन, रोपिवेकेन एंड डाइब्यूकेन. सरफेस एनेस्थेटिक्स में हमारे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. सॉल्युबल में हमारा आता है क्लिप, कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन एंड प्रोपेराकेन. इनसॉल्युबल में हमारा आता है बॉब, benzocaine, butyl amino benzoate and oxythazine. अब हम बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मतलब जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स है वो वर्क कैसे करता है बॉडी में. द लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द नर्व कंडक्शन बाय डिक्रीजिंग द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस ड्यूरिंग द अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल. As the concentration of the LA is increased, the rate of rise of action potential and maximum depolarization decreases, causing slowing of the conduction. And finally, the local depolarization fails to reach the threshold potential and leading to conduction blockade. Now let's put this into simple words. So talking about the mechanism of action, सबसे पहले क्या होता है, there is displacement of calcium ions from the sodium channel receptor site, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर जाता है उन्हीं रिसेप्टर साइट से. अब जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक का मॉलिक्यूल बाइंड कर गया है, इट विल कॉज ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल. जो हमारा सोडियम चैनल है वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से देयर विल बी अ डिक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस. मतलब सोडियम चैनल बंद हो गया है और सोडियम का कंडक्टेंस भी कम हो गया है, विच कॉजेज डिप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा डीपोलराइजेशन कैसे होता है, सोडियम चैनल से वर्क करता है. अगर हम सोडियम चैनल को ही बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो डीपोलराइजेशन है वो भी बंद हो जाएगा. सो देयर इज फेलियर टू अचीव द थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल लेवल, विच इज ऑल्सो नोन एज द फायरिंग लेवल, which causes the lack of development of propagated action potentials, which is very obvious. और इसी सारे प्रोसीजर की वजह से we lead to conduction blockade. मतलब जो भी हमारी impulses हैं उसका conduction gets blocked. So that's how the LA works. Now let's discuss the addition of vasoconstrictor to local anesthetics. LA में हम वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ऐड कर रहे हैं, बट ज़रूरत क्या है?
ज़रूरत ये है कि जब हम किसी भी वेसोकंस्ट्रिक्टर को, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन को एलए में ऐड करते हैं, इट स्लोज डाउन देयर एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड डेप्थ ऑफ द एनेस्थेटिक इफेक्ट व्हाइल रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द एनेस्थेटिक नीडेड। अब वेसोकंस्ट्रिक्टर ऐड होने से हमारी ड्यूरेशन भी बढ़ जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन कम हो जा रहा है, and the amount of anesthetic required also decreases. Whereas there are some disadvantages as well. So let's study about them in detail. अब जो हमारा वेसोकंस्ट्रिक्टर ऐड होता है ना, वो स्पेसिफिक अमाउंट में ऐड करते हैं with respect to dentistry. So usually adrenaline is added in the ratio of 1:50,000 or 1:2 lakh. Now let's talk about the advantages as well as the disadvantages of adding vasoconstrictor to the local anesthesia. Now addition of vasoconstrictor prolongs the duration of action of local anesthesia by decreasing their rate of removal from the local site into the circulation. It enhances the intensity of nerve block and reduces the systemic toxicity of local anesthesia. Also, it provides bloodless field during surgeries. Whereas, talking about the disadvantages, increased chances of local tissue edema, necrosis, and delayed wound healing by reducing the oxygen supply and enhancing oxygen consumption in the affected area. Oxygen की supply को कम कर दे रहा है और ऑक्सीजन के कंजम्पशन को बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से लोकल टिश्यू में हमारा एडिमा हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू डिलेड वुंड हीलिंग. इट मे रेज द ब्लड प्रेशर एंड प्रमोट एरिथमिया इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स. So that was all about the advantages and disadvantages of adding the vasoconstrictor to local anesthesia. Now let's talk about the local actions of LA. जब हम LA कहीं पे लगा रहे हैं तो उस साइट पे उसकी क्या actions है, let's discuss about them. So there is no or minimal local irritant action. It blocks the sensory nerve endings, nerve trunks, neuromuscular junctions, ganglionic synapses and receptors non-selectively. It also reduces the release of acetylcholine from motor nerve endings. If injected around a mixed nerve, they cause anesthesia of skin and paralysis of voluntary muscles supplied by that nerve. Talking about the sensitivity of LA, it can be determined by the diameter of the fiber as well as the fiber type. When applied to the tongue, bitter taste is lost first, followed by sweet and sour, and the salty taste being the last of them. Moving forward, here comes the systemic actions of the local anesthetics. जब हम local anesthetics को एक specific जगह पे apply कर रहे हैं, तो जो उसके उस जगह पे action थे, वो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े, मतलब उसके लोकल एक्शंस. वेयर एज हमारी पूरी बॉडी में और क्या क्या एक्शन कॉज कर रहा है, दैट कम्स अंडर दी सिस्टेमिक एक्शंस. तो सिस्टेमिक एक्शंस में हम सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्व्स, द ऑर्डर ऑफ नर्व ब्लॉकेड इज, सबसे पहले देयर इज लॉस ऑफ पेन, देन टेम्परेचर, देन टच एंड प्रेशर बीइंग द लास्ट ऑफ देम. टॉकिंग अबाउट द CNS, most of the local anesthetics cross the blood-brain barrier. Initially, they cause CNS stimulation and then depression in higher doses. तो सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है, CNS का stimulation करा रहा है, और जब हम और डोज बढ़ा देते हैं, then it causes the depression. They cause excitement, tremor, twitching, restlessness, and convulsions. Larger doses can cause respiratory depression, coma, and even death. This is coma. Now talking about its effect on the cardiovascular system. अब हमारा हार्ट पे कैसे काम कर रहा है? The local anesthetics are cardiac depressants, but no significant effects are observed at conventional doses. The local anesthetics block the sodium channels, which decrease the abnormal pacemaker activity, contractility, conductivity, excitability, heart rate,
cardiac output and increases the effective refractory period. At higher concentrations, the intravenous local anesthetics may precipitate cardiac arrhythmias. Now, there is a local anesthetic which is bupivacaine. It is more cardiotoxic than other local anesthetics. It may cause cardiovascular collapse and even death. Whereas another local anesthetic, which is lignocaine, it decreases the automaticity and is useful in ventricular arrhythmias. Talking about the blood vessels, the local anesthetics tend to produce fall in blood pressure. So they cause hypotension due to vasodilatation and myocardial depression. चलो अब हम फटाफट से बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो हमने अभी ही पढ़ा था कि हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो या तो हमारे एस्टर लिंक्ड होंगे या फिर हमारे अमाइड लिंक्ड होंगे। अब जो हमारे एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं दे आर रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय द प्लाज्मा cholinesterase, whereas the amide linked local anesthetics are metabolized mainly in the liver. Now LAs are not effective orally because they have high first pass metabolism. Also, in liver diseases, the metabolism of lignocaine may be impaired. Hence, the dose must be reduced accordingly. Coming to the adverse drug reactions, first we'll talk about the CNS. The local anesthetics may cause restlessness, tremors, headache, drowsiness, confusion, convulsions, respiratory depression, coma, and may even lead to death. Talking about the cardiovascular system, it may cause bradycardia, hypotension, cardiac arrhythmias, cardiovascular collapse, and even death. Talking about the allergic reactions, it may cause skin rashes, itching, urticaria, angioedema, dermatitis, asthma, and rare anaphylaxis. Local tissue irritancy, it is more painful, it has low tissue toxicity, delayed wound healing may be there, localized mucosal slowing may occur, and it can seldom lead to necrosis as well. Now, what are the precautions with respect to the drug reactions that we have to keep in mind while injecting local anesthesia? Always before injecting the local anesthetics, aspirate lightly. Inject the local anesthetic slowly. Do not exceed the maximum safe dose, especially in the children. When lignocaine is used along with propranolol, it may reduce the metabolism of lidocaine and other amide local anesthetics by reducing the hepatic blood flow, which impairs the clearance of lignocaine and leads to toxicity. Whereas talking about the drug reaction of local anesthetics along with vasoconstrictors, they are avoided in patients with ischemic heart diseases, cardiac arrhythmia, thyrotoxicosis, uncontrolled hypertension, and in those receiving beta blockers or tricyclic antidepressants. Now let's talk about the various techniques which are used for administering the local anesthetics. सबसे पहले हमारा आता है surface anesthesia. This is produced by topical application of surface anesthetic to mucous membranes or to the abraded skin. Then comes the infiltration anesthesia. The dilute solution of the local anesthetic is infiltrated under the skin in the area of operation so that it blocks the sensory nerve endings. Then comes the conduction block. The local anesthesia is injected around the nerve trunks so that the area distal to the injection is anesthetized and paralyzed. It contains the field block and the nerve block. In field block, the anesthesia is produced by injecting the local anesthetic subcutaneously in a manner that all the nerves coming from a particular field are blocked. Whereas in the nerve block, it is produced by injection of local anesthesia around the appropriate nerve trunk or plexuses. The nerve block lasts longer as compared to the field block as well as the infiltration anesthesia. Then comes the spinal anesthesia.
In this, the local anesthetic is injected in the subarachnoid space between L2 and 3 or between L3 and 4. Talking about the epidural anesthesia, the spinal dural space is usually filled with semi-liquid fat through which the nerve roots travel. So, in epidural anesthesia, the local anesthetics are injected into this space, which acts primarily on the nerve roots. And the last one being the intravenous regional anesthesia. Now comes the individual local anesthetics. We'll discuss about them in the next video. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? Let's recap. सबसे पहले we read about the basics of local anesthesia. Local anesthesia होता क्या है? It is a loss of sensation in a circumscribed area of the body which is caused by a depression of excitation in nerve endings or an inhibition of the conduction process in the peripheral nerves. So no loss of consciousness is present in the local anesthetics. Then we read about the difference between the general anesthesia and the local anesthesia, followed by the chemistry of the local anesthetics. It has amphiphilic property and these are the weak bases. Amphiphilic कैसे बोल रहे हैं हम? जो हमारा local anesthetic है उसके एक साइड में हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक साइड में हमारा लाइपोफिलिक पार्ट होता है और उसको ज्वाइन कौन कर रहा है? हमारा एल्काइल चेन. Now these are linked either by the ester formation or the amide ones. Ester में हमारा आता है PC, प्रियंका चोपड़ा से हमने याद किया था, प्रोकेन एंड कोकेन. अमाइड लिंक में हमारा आता है सबसे कॉमनली यूज्ड लिडोकेन, जिसको हम लिग्नोकेन भी बोलते हैं. इसके बाद हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन. उसका हमारा निमोनिक था बॉब, प्लीज कम लेट्स प्ले द बर्ड क्लिप. जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, ईदर दे कैन बी इंजेक्टेबल और सरफेस एनेस्थेटिक्स. इंजेक्टेबल की हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी और सरफेस की हमने सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल पढ़ी थी. देन वी रेड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ LA, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो कैल्शियम आयंस को डिस्प्लेस कर देते हैं सोडियम चैनल से, धीरे धीरे करके सोडियम चैनल के कंडक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता and ultimately leading to the conduction blockade. उसके बाद we read about the addition of vasoconstrictor to LA. हम क्यों ऐड कर रहे हैं? कुछ advantages हैं, whereas there are some disadvantages as well. Then we read about the local action of the LA. Then systemic action. Systemic action में हमने nervous system पढ़ा था, जिसमें हमने peripheral nerves और CNS पढ़ा था. And then we read about the CVS, जिसमें हमने heart के बारे में पढ़ा था, heart पे कैसे act कर रहा है, as well as the blood vessels. Then we read about the pharmacokinetics. Pharmacokinetics में हमने क्या पढ़ा कि ester linked होते हैं, amide linked होते हैं. ester linked LAs हमारे metabolize होते हैं प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज के थ्रू और जो हमारे अमाइड लिंक्ड हैं वो हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं. देन वी रेड अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑन CNS, CVS, allergic reactions as well as some local tissue irritancy. Then we moved on to the precautions that have to be kept in mind while administering the local anesthetics as well as the drug reactions associated with the local anesthetics. उसके बाद हमने टेक्निक्स पढ़ी थी. सरफेस एनेस्थीसिया हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया हो सकता है, कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है. कंडक्शन ब्लॉक में हमारा फीड ब्लॉक आता है और नर्व ब्लॉक आता है. देन स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो सकता है या फिर हम इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद हमारे आते हैं इंडिविजुअल लोकल एनेस्थेटिक्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है लिग्नोकेन या फिर लिडोकेन. बाकी के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट इन डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिडोकेन ओनली. एंड देन एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग द लोकल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थीसिया स्पेशली in relation to the dentistry. So that's all for the video today. I hope you enjoyed the session. In case of any doubts or queries, the comment section is always open for you. Just comment below and I'll surely reply. Thank you so much. See you on the other side.